Welcome to the Pavilion. मैं हूं फख्र आलम और आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And the news out of Melbourne Cricket Ground MCG is that India has defeated Pakistan in what could only be described as just a spectacular game of cricket. Just fantastic. This is what the fans want and this is what the fans deserve. And this is how the biggest game of cricket should be at the end of the day. Brilliant. Congratulations to India and all the Indian fans. You should celebrate and you should be very proud of that outstanding innings and the genius of Virat Kohli. I sometimes say aliens do walk amongst us, and there's one right there, Virat Kohli. Just absolutely fantastic. Let's take a look at the match summary. This is how it all went down. India definitely won a great toss. This was a great toss to win. They put Pakistan into bat and the Pakistani batsmen were completely lost in the beginning. The ball was just doing too much. And we, of course, lost Babar and Rizwan right up top, who we depend heavily on. But after that, we have to give credit to Shan Masood and Iftikhar. Shan Masood for laying the foundation, for making sure that he protected one end. But Iftikhar there with a blindingly fine innings. Just outstanding. Afridi also contributing there, but then it was the Virat Kohli show on the other end. Let's take a look at this points table now. This is the first game of this group, and India now sit right on top with a great average and the 2 points, and Pakistan right at the bottom of this table. Pakistan, well, we have games ahead of us. This is just the beginning of the World Cup. One team was going to lose today, and unfortunately for Pakistani fans, it was Pakistan. Nonetheless, we've got games ahead, and let's see how we pull through on that. Let me bring in my panelists, my guests, the icons, the legends, the superstars. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis, and the great Wasim Akram. Gentlemen, welcome, and what an exhilarating game of cricket, Wasim. Yes, let me gather myself because there were so many ups and downs today. Yes, sometime in the beginning, Pakistan lost 2 quick wickets. Then we partnership Iftikhar ki bani shan ke saath, phir Iftikhar out hua. Then we lost 5 wickets. We were 115 for 6, and then in the end we got to almost 160. I think it's too much for me, man. At my age. We were sitting watching it together. But yeah, coming back to the game, I think we recovered well to get to 159 on that pitch. Toss was crucial. We saw early on ball घूमा है नया, ball पड़ के seam हुआ है, extra bounce हुआ है. And I think we recovered well from there where we went. And Iftikhar ki innings, फिर Shan ki innings बहुत ज़बरदस्त थी. But in the end, Virat Kohli, like you said, rightly so, कि aliens do walk among us. He is one of the best ever I've seen in the recent modern. अगर आप grades की बात करते हैं, वो अब से नहीं पिछले 15 सालों से स्कोर कर रहा है और चेजिंग में उसका स्कोर दुनिया में सबसे बेहतरीन एवरेज है उसकी. जिस तरीके से वो खिला है, will पूरी गेम पे आहिस्ते आहिस्ते बात करेंगे. We have so much time. We have plenty of time. Let's just start with the Pakistani batting now. We lost the toss. We were put into bat there, Waqar, and the ball was really talking up front. Yeah, fresh pitch. I mean, and unke jo bowler hain, wo sare, they're all seam bowlers. They're not very quick, but they put the ball in the right areas and they troubled Pakistani batsmen. They picked up, 2 of our major wickets in the beginning. It was tough, and I must give credit to, Shan Masood, the way he played. I thought he stuck in well, and he बहुत ही अच्छे तरीके से खेला. मुश्किलात हुई, beat वो भी हो रहा था, लेकिन he sort of gave himself time. And then Iftikhar, of course, came and he played really well. It was a nail-biter. I mean, you can't really ask for more from a game of cricket. I mean, it was just too good a game. I don't mind losing this sort of game. I don't think Pakistan should even feel bad about it. In this sort of game, anybody can lose and win. So as long as you play really well, and I think Pakistani, they should keep their heads high and say, okay, we lost, but we played like champions. And Vicky, I think, and most importantly, they should, okay, like you said, and rightly so, close game, any team can win, but you learn from your mistakes. Of course. And I think that's the step that's what we're going to chat in the next. So let's go through our batting order first. Now, we lost Rizwan and Babar Azam right on top, Misbah. And that added a lot of pressure on Shan Masood because all of a sudden the 2 key players were out of the equation. Yeah, I think बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी और स्पेशली जब आप ऐसा बड़ा मैच खेल रहे होते हैं
आप पे वैसे भी प्रेशर होता है, शान पे एक्सपेक्टेशंस, और आप रिप्लेस कर रहे हैं फ़ख्र को, काफ़ी अरसे से वो नहीं भी खेला टीम में. सो इम्पोर्टेंट गेम अगेंस्ट इंडिया, फर्स्ट गेम in that sort of situation, World Cup, I think he handled the pressure well. और अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि ठीक है शुरू में समझ नहीं आ रहा था, बट जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है, जब इकट्ठी विकटें गिरी हैं, तो इट वाज शान मसूद बिकॉज ऑफ हिम. वो जब आखिर तक गया, उसकी वजह से ही ये एंकरिंग 159 रन हुए. अदरवाइज़ अगर वो भी आउट हो जाता, जब 2-3-4 इकट्ठे आउट हुए, तो आई थिंक एक स्टेज पे हमें लग रहा था कि शायद 125-30 रनों से ज़्यादा ना हो. Let's take a look at the first over that Rizwan, it was a maiden over and the pitch looked unplayable. Look at this, the way it was. Assessing the pitch, ball coming on. इसमें हमने जब प्री मैच कर रहे थे, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस कि रिजवान को वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करेंगे और वहाँ से ट्राई करेंगे कि अवे स्विंग करें, और वही उन्होंने किया. अगर आप पूरा ओवर देखें, एक्सेप्ट दिस गेंद जो एक वाइड बॉल जो हुआ, उसके अलावा वो नहीं हिले. वो उसके अपने जो प्लान करके आए थे अगेंस्ट रिजवान, वो उसी तरह उसको टारगेट करते रहे. हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, जो बहुत स्विंग हो रहा था बॉल, उसमें ये था कि थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था, बिकॉज यू आर सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. हमने ओवरऑल अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, हमने ये देखा है कि जिन बैट्समैनों ने थोड़ा सा आके पड़े हैं बॉलर्स को, उनको सक्सेस मिल रही है. अगर हम पूरा वर्ल्ड कप अभी पढ़ने का भी तरीका होता है. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, गिव योरसेल्फ रूम, प्ले विद अ स्ट्रेट बैट. अब अंधाधुंध मारना इज आल्सो नॉट फीजिबल ऑन पिच लाइक दिस. एम आई राइट? अंधाधुंध पढ़ने का वसीम भाई ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए. जो बैट्समैन, अगर मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है कि यार जाके मैं कौन से शॉट्स खेल सकता हूँ. तो यही बाबर और रिजवान को भी पता. खैर बाबर तो एक बॉल ही खेला है, बट ये बैट्समैन को, ये अगर पाकिस्तान टीम की बात करते हैं हम, सो ये बैट्समैन को कितनी देर में पता लग जाता है, फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल लेवल पे, कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है एज अ बैटर. देखें वसीम भाई, ये तो आपको क्लब क्रिकेट में पता चल जाता है. कि हैदर अली को अभी तक नहीं पता लगा. We'll talk about that when we come down the order, Wasim. This is the Arshdeep over where Babar lost his wicket. He got LBW. But look, he was moving the ball both ways. Waqar, you must be really proud of this bowling. Yeah, the length he was bowling, that was crucial, He was just nice and full and was giving the ball to chance to sort of swing. It was not the actual swing which was causing an issue. It was more of a seam. Swing आपसे फिर भी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है, but जो पढ़ के उसके बाद जो वो डिविएट करता है गेंद, that becomes really really difficult for the batsman. So I think उनके बॉलरों ने, सब ने, शामी ने भी, I thought they bowled really well with the hard new ball. Once the ball got a little older, I thought our batsmen handled it pretty well. Yep, and so Shan and Iftikhar put up a great partnership, Misbah, and that partnership actually is the reason why we got to that 159, which at one point looked like an elusive total, because हम तो बहुत सारे लोग समझ रहे थे तो 110, 115 तक भी पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली हम लोग मैच खेलें इंडिया के साथ, तो होता क्या है कि आप एकदम से बिल्कुल वन साइडेड गेम हो जाती है, और आप वहाँ पे मोमेंटम जैसे आपको नहीं मिल रहा, और आप वहाँ पे अगर गिव अप कर देते हैं, एक भी और आउट होता, तो मेरे ख्याल में मैच हमारे हाथ से बिल्कुल ही निकल जाता. बड़े तरीके से खेले हैं दोनों, और स्पेशली वहाँ से मोमेंटम जैसे वापस लेके आए, और एग्जैक्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि बॉलर को टारगेट किया. एक बॉलर को टारगेट किया, और उसको उस ओवर के बाद पूरा जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, प्रेशर इंडिया पे वापस आया. तो आई थिंक इस लिहाज से ये जो इफ्तिखार के जैसे वो स्पिनर आए हैं, वो 4 या 6 ओवर उनके जहन में थे कि इनको यहाँ पे ऐसी पिच पे नहीं छोड़ना. सो दैट वाज क्लैरिटी, एंड द वे ही जस्ट मिडल दोज बॉल्स. आई थिंक आई स्टिल फील कि इफ्तिखार को अफसोस होगा, और मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान शायद बड़ा टोटल कर लेता अगर वो जिस उस टाइम पे आउट ना होता. देखें तो 2 ओवर्स ऐसे हुए हैं जहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ है. जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, तो जब अक्षर पटेल को लेफ्ट आर्म स्पिनर को रन्स पड़े हैं, तो मोमेंटम हमारी तरफ आ गया. जब नवाज को आई थिंक 12वें ओवर में 3 छक्के लगे हैं, मोमेंटम उस तरफ चला गया. तो मेरे ख्याल में ये है कि, और हम फिंगर स्पिनर की बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, लेकिन दोनों को इसलिए मार पड़ी कि सेकंड प्लान नहीं था. वो स्टंप्स में ही रहे या उन्होंने फॉलो किया, और अगर बॉल टर्न नहीं हो रहा तो बहुत इजी हो जाता है. और जिस ग्राउंड पे हम लोग खेले हैं,
सामने की दोनों बाउंड्रीज छोटी। बिल्कुल जी। देखिए आई फील कि पाकिस्तान ने आज बैडली मिस किया है फोर्थ फास्ट बॉलर। फ़हीम अशरफ होता या वसीम होता या कोई भी होता, स्नैन होता, धानी होता। आई थिंक टुडे वाज द डे जहाँ पे इतनी अच्छी आपको पिच नज़र आ गई थी। आई थिंक पाकिस्तान प्लेड 1-2 मिनी बैट्समैन जी। ठीक है, आप देख लें, अगर उठा के देख लें तो किसी ने भी नहीं किया ना, आपके रन्स तो आपके 2-3 नहीं किए हैं। सो आई डोंट थिंक यू नीड 8 बैट्समैन टू गो विद। आई थिंक पाकिस्तान have to think really hard कि is this the way to go, because spinners in Australia on those flat pitches they can be dangerous। एक ओवर ही आप सारा मोमेंटम शिफ्ट कर देता है, गेम का पासा बदल देता है। सो आई फील कि पाकिस्तानी मेड अ मिस्टेक आफ्टर लुकिंग एट दैट पिच। समटाइम आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप पीछे क्या करते हुए आ रहे हैं, आप जो कंडीशन नज़र आ रही है या पिच नज़र आ रही है, घास नज़र आ रहा है, मॉइस्चर नज़र आ रहा है, I think Pakistan should have gone with another pacer. I said it in the morning also. जी, you did. बिल्कुल ये वकार भाई ने सही कहा। और इसका हमें मेरे ख्याल में झटका एशिया कप के मैच में भी पड़ा था अगेंस्ट इंडिया। वहाँ पे भी हमारे पास जो ओवरऑल रिसोर्सेज थे वो ऐसे ही थे। वहाँ पे भी हमें अगर चौथा सीमर हमारे पास होता, 147 148 जो रन हमने किए थे, वहाँ भी स्पिनर्स के ओवर फंस गए थे बीच में। अदरवाइज़ फोर्थ सीमर होता तो मेरे ख्याल में वो भी सिचुएशन डिफरेंट होती। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा ऐसी कंडीशन, स्पेशली अगर ग्रास है एंड यू फील के यार यहाँ पे तो 4 सीमर ज़रूरी है। एक चीज़ और है, अब इसलिए भी नेसेसरी हो गया है कि वो पूरी तरह फिट नहीं है। जी हाँ, और मुझे ये लगता है कि अगर हम पिच या जो कंडीशंस है उससे भी पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यार हम कुशन कैसे दें शहीन को या अपने बॉलिंग अटैक को। तो एक आपको बैट्समैन कम करके आपको ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा उससे। बिल्कुल बनेगा। आज भी बाय द वे आफ्टर इफ्तिखार एंड शान मसूद द हाईएस्ट स्कोरर टुडे वाज शाहीन शाह अफरीदी विद द 16 रन्स जो उन्होंने कैमियो प्ले किया आज। And that takes me back to what Waqar's point was, that maybe we have just too many batsmen and then nobody's really delivering. देखिए हम जब सोचते हैं ना कि हम बैटिंग को कुशन दें, आप बैटिंग को कुशन दे रहे हैं। आपने 8 बैट्समैन खेले हैं, आपको नवाज भी वैसा ही खेलता है, बल्कि नवाज और शादाब वो बैट्समैनों से बेहतर खेल रहे हैं इस वक्त। तो आप उनको अगर एक कुशन दे रहे हैं अली के साथ या आसिफ अली के साथ या हैदर के साथ, तो why not you give your bowlers a cushion, because they need it more. They will defend anything around 140 150 if they have a cushion. If they have a cushion. Wasim, now we come to what you were making a point कि आपको पता चल जाना चाहिए, और शोएब ने कहा कि जी बिल्कुल आपको फर्स्ट क्लास में और क्लब लेवल में पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें क्या नहीं होनी चाहिए। So we saw now कि once our middle order came in after Iftikhar left the crease, the lower middle order then just kind of started hitting vaguely. We were lost. Yeah, they were lost, right? There was no plan. Individual एक टीम का प्लान होता है, एक इंडिविजुअल प्लान होता है आपका एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन की ये सिचुएशन है, मैंने ये करना है, मेरे सामने सेट बैट्समैन शान मसूद बैटिंग कर रहा है, I'll rotate the strike for 1 or 2 overs, maybe 1 over, and then I'll have a go. Ab that's a disappointment. Haider really got a talent, yes. His fielding is average, and Asif Ali as well. He's struggling. I mean, हल्का सा मीडियम पेसर ने बाउंसर किया है, समझ नहीं आया उसको। तो ये इनको सोचना पड़ेगा, बाकी टीमें देख रही हैं, दे वॉचिंग दिस गेम, उनका डाटा एनालिसिस सारे देख रहे हैं, तो वो इनको आगे बॉल नहीं करेंगे अब, वो स्पेशली आसिफ अली को नहीं करेंगे। और हैदर ने जो शॉट मारी है, वो देख रहे हैं कि इफ्ती ने क्या शॉटें मारी हैं, शान क्या खेल रहा है, और आप आए हो, आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग। बट दिस गाय हैज गॉट पावर, दैट्स द थिंग, इज गॉट टैलेंट। ये जरा मुलाहिजा करें, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड। अगर इससे पहले हम लोग देखें ना, तो जो भी नया बैट्समैन आ रहा था उसके लिए शॉर्ट मिड विकेट ऊपर था। सो इट वाज देयर प्लान कि हम इसको ये लेंथ पे बॉल करेंगे, मिड विकेट हम पीछे ले जाएंगे जहां पे ये कैच हुआ। तो देखें आपको एज अ बैट्समैन, look at that, you can see that on your screen. Pandya is like telling him, look boy, we had you. as a batsman, as Wasim bhai said, कि आप थोड़ी सी स्ट्राइक रोटेशन अगर करेंगे, और उस वक्त वो रिक्वायरमेंट थी। आपको विकेट का पता चलता है, आपको बॉलर्स का पता चलता है कि किस लेंथ पे करा रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट क्या है, तो आप भी सेट हो जाते हैं। अब देखें विराट के छक्के एंड में ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो पावर हिटर है, वो पावर हिटर नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ बॉल्स ही फेस्ड
इन Yes. दिस गेम, तो उनको आइडिया हो गया था कि पिच क्या कर रहा है या बॉलर्स क्या कर रहे हैं। अगेन मिसबा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपने इंडिया की इनिंग देखी, खास तौर पे ये जो पंड्या की और विराट कोहली की पार्टनरशिप लगी, द अमाउंट ऑफ twos and the threes that they were taking, and we were trying to hit the boundaries. You know, we could have pushed in those big gaps and also run the twos and the threes, but I guess then fitness comes into play. नंबर वन चीज़ जो किसी भी क्रिकेटर के लिए, चाहे वो बॉलर है या वो बैट्समैन है, रिस्पेक्ट द कंडीशंस, असेस द कंडीशंस। अगर आपको कंडीशंस को असेस किए बगैर आप कहेंगे कि मैं जाके कुल्हाड़ा चला दूंगा एज अ बैट्समैन, यू नॉट गोइंग टू स्कोर रन्स। Right. आपको जितने भी बैट्समैनों ने यहाँ पे रन्स किया, आप उनको देखें, उन्होंने एरिया, इवन शाहीन अफरीदी को देखें कि उसने भी एंटिसिपेट किया। पहला उसको पता था वो थोड़ा सा नीचे हुआ है, स्लो शॉर्ट बॉल है, उसको छक्का, अगली बॉल पे उसने रूम दिया अपने आप को कि मिड ऑफ ऊपर है, मैं यहाँ इसको मारूंगा। तो मतलब एज ए बैट्समैन आपको ये चीज़ें करनी है। विराट को देखें, उसने पूरा सेटअप किया बॉलर को, उसको असेस किया ये कौन सा गेंद मुझे हारिस करेगा, उसने अपने आप को रूम दिया और ही वाज वेटिंग विद दैट स्लोअर वन। अगली बॉल पे फाइन लेग पीछे गई है तो उसको पता था कि ये अब फॉलो करेगा मुझे इस चीज़ पे, वो उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा। तो दिस इज़ हाउ यू स्कोर रन्स। अदरवाइज मुंह उठा के अगर आप कहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं हिट मार दूंगा विदाउट एनी प्लान, देन इट्स नॉट दैट इजी। इवन पांड्या को आप देख लें कि उसने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली है, बड़ा टाइम लिया है, कैलकुलेट किया है, फिर देखा है कि अच्छा जी कैसे हमने इनिंग को बिल्ड करना है, हर ओवर में हर बॉल पे ऐसे ही नहीं मार देनी, हमने बॉलर को पक्का करके एरिया कोई ढूंढना है, वहां पे हमने हिट मारना। And he is a power hitter. Pandya, we all know. Yes. But this inning was totally different. Correct. He scored 40 of 37 deliveries, just overrun a ball. Yeah. Because that was the requirement. उसको किसी कोच ने नहीं बताया, उसको किसी ने नहीं बताया, उसको पता है सिचुएशन क्या है, गेम अवेयरनेस क्या है, सिचुएशन अवेयरनेस क्या है। हमारे लड़कों को कब समझ आएगी? दिस इज द फ्रस्ट्रेशन आई हैव विद द यंगस्टर्स। हैदर अली हैज बीन विद टीम फॉर लास्ट 4-5 years ऑन एंड ऑफ। देखिए, पाकिस्तान में एक जो कॉन्सेप्ट, एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट हो गया कि व्हेन समबडी क्रिटिसाइज दीज बैट्समैन या कोई भी ऐसे यंग प्लेयर आते, देखें जी गेम चेंज करा दी, देखें उसको फ्री खेलने नहीं दे रहे। भाई फ्री खेलें आप, बट यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्लान। अगर मैंने हिट भी मारनी है तो मुझे सिलेक्शन चाहिए, बॉल सिलेक्शन, बॉलर को मैं किस तरफ मार रहा हूँ, बाउंड्री किस साइड की है, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है। इसके बगैर आप करेंगे तो क्या हो गया, आप 10 में से कोई एक इनिंग आपकी हो जाएगी, वरना आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल लूज योर विकेट और टीम सफ़र करेगी। So clearly, we still have a problem in the middle order that needs to be addressed in the sense that we need to have a communication with them. Not at all कोई इस वक्त हम लोग किसी को dishearten करने की नहीं कर रहे, because पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है अभी। But I think बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह वसीम ने कहा, कि आप अपनी गलतियों से सीख के वो है। हमारी कोशिश यहाँ पे कि हम इन गलतियों को एनालिसिस कर रहे हैं, and hopefully मैनेजमेंट इससे भी ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रही होगी। यही तो मैसेज देना है यंग जनरेशन को, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, इन जनरल। जी, सिचुएशन अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, दैट्स नॉट द गेम क्रिकेट आई एम टॉकिंग अबाउट। लाइफ का भी ये कह रहा हूँ, ट्रैफिक गाड़ी चलाते हुए भी ये कह रहा हूँ कि हर जगह नज़र होनी चाहिए। एंड व्हाट आई डोंट लाइक इन दिस डे एंड एज, जब अगला मुझे कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था, दैट्स नॉट द आंसर आई वांट। एवरीथिंग इज ऑन योर पाम राइट नाउ, यू कैन फाइंड आउट वट एवर यू वांट इन द वर्ल्ड। सो दोज एक्सक्यूजेज यू कांट गिव एनी मोर। दिस इज मोर ऑफ अ कल्चर देन एनीथिंग एल्स। जो आपका यंग जैसे बॉलर है ना, 140 वाला यंग है वो, आप उसको खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप बैट्समैन को चाहते हैं कि वो आके किसी की जगह ले नेशनल टीम में और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे, उसके पीछे जब तक डोमेस्टिक के को 50-100 मैच नहीं लगे होंगे, उससे डिफरेंट सिचुएशन में खेलना आना बहुत मुश्किल बात है। उसको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अच्छा जब इस तरह की एवरेज चाहिए। These cricketers like our Asif Ali and Haider Ali, do they play first class cricket or they're not bothered? आसिफ तो खेल रहा है काफ़ी टाइम से, बट वाइड पहला सीजन खेला है। हैदर स्कोर 800 समथिंग रन इन द फर्स्ट क्लास इन द फर्स्ट सीजन। ही इज बीन प्लेइंग T20 क्रिकेट रेगुलर खेल रहा है, फिर पाकिस्तान ए से खेला है, साइड मैचेस खेला है। So I want to, ये हैदर का आपको डिसमिसल टीवी पे नजर आ रहा है, सॉरी आसिफ का आपको डिसमिसल नजर आ रहा है। We were talking about आसिफ, एक दफ़ा दोबारा लगाइएगा। मिसबा, what's going on with him over here? Because even in the England home series, you know, ये शॉर्ट बॉल वाला मामला जो है आसिफ का, ये एक्सपोज होता जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। लेकिन बात वही है कि जब ऐसे लगता है कि आप वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। आई मीन यू आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही वाज स्टिल, जो मैंने एक टेक्निकल पॉइंट इसका डिस्कस किया था पहले भी, अगर आप देखें कि बॉल इज़ अबाउट टू लैंड और हिज फ्रंट फुट इज़ स्टिल गोइंग,
जब बॉल उसके पास आ गया उस वक्त उसका फ्रंट फुट जाके स्टेबल हुआ है, देन ही हैज़ नो टाइम टू बेसिकली स्विंग द बैट। बॉल आप तक पहुंच गई थी, ये देखिए आप ये लैंड हुआ और गेंद आपको पहुंची हुई है। तो बाकी जितने बैट्समैन आप देख लें, बिफोर अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ आपने पोजीशन बनाई है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद या आपने प्लांट कर लिया पैर, पांड्या को अगर दिखा सकें किसी भी और बैट्समैन को, एंड देन दे जस्ट swing the bat. Swing of the arms. Clearly you are late. Picking the length, आप उसमें late. And by the way, this wasn't an express fast bowler. This was a medium pacer. मैं उस दिन भी आपको यही बता रहा था क्योंकि हमारी पिचेस पे इवन ये पंड्या का देखें आप, ये राइट, दिस इज स्पिनर, बट हम वो फास्ट बॉलर की इनकी देखेंगे। ये तो खैर इसमें भी वो बड़े लोडेड रहते हैं पहले से, अगर आप उनका देखें। शोएब ने कल बताया था कि इफ यू गिव हिम दैट स्विंग ऑफ द आर्म्स ही इज गोइंग टू स्विंग वेरी हार्ड। एग्जैक्टली, और उन्होंने ना वेरिएशन नहीं किया बॉल में। देखिए वेरिएशन आपको करना पड़ेगा बॉल में। बॉल अगर टर्न नहीं होगा आपका, और वो तभी हो सकता है जब आप variation use करें। Now let me explain about pressure. When we talk about pressure, especially game like this where 100,000 people watching, and you know as a player 1.5 billion people watching back home or in India or worldwide, Pakistani Indians, because बाकी भी गेम का इतना इंटरेस्ट होता है। जब शुरू में बैटिंग करने आया आपका हमारा जिसने 50 किया है शान, यू सी उसका मुंह थोड़ा अंदर था, खुश्क हो रहा था, ये होता है प्रेशर। और जब आखिरी ओवर करने आया आपका नवाज, ही हैड द सेम थिंग, फेस वाज स्लाइटली वाइट। दैट्स वेयर द कप्तानी बड़ी ज़रूरी है। उसे गले में हाथ डालो कप्तान से, लड़के को कोई बात नहीं, हार ही जाएंगे ना, विल सपोर्ट यू। इस तरह की चीज़ें अब ये सीनियर लड़के हैं, इनको ये प्रेशर तो पड़ता है, हम पे भी पड़ा है प्रेशर खेलते हुए, लेकिन हमने शो नहीं किया। देखें तो जो प्रेशर रोहित शर्मा और केएल राहुल के फेसेस, दोनों के फेसेस पे था जब वो आगे खेले हैं। अगर हम फर्स्ट ओवर दिखा सकें, अभी हम आएंगे इनकी इनिंग्स की तरफ, हम आएंगे अभी। अभी हम देखेंगे नवाज का लास्ट ओवर भी। वकार, क्विकली, व्हाट would you, because you've coached the Pakistan team, you've captained the Pakistan team, what conversation would you have with Shadab, Haider Ali, Mohammad Nawaz and Asif Ali regarding their batting, because the four of them together only put on 18 runs and lost their wickets pretty quickly. So what would you be, क्या conversation होगी कि भाई अब आने वाले मैचेस के अंदर ये देखें, अब जब ऊपर बाबर और रिजवान नहीं चलते तो you need to really deliver. Look, अब तो the team is there right now. You can't really do anything about it. No, but to be honest, Asif, what I see right now, that his confidence is totally shattered. और जब confidence आपका shatter हो गया होता है, तो then I think it's better ये होता है कि either आप you give him a break for a game or two, और and take him to the nets. तो जो बात कर रहे हैं कि arm around him, confidence and make him just learn from his mistakes. Because अगर आप उसको दूसरे मैच में डालें ही, तो वो तो वैसे ही shell में चला गया. He's going down and down. He'll go further down. No, and that issue. But that's again because he's a professional. He is a professional. Nothing taking away from that. That he has to live with it. Yeah, he has अगर to हम deliver. यहाँ बैठ के critics हैं या criticize कर रहे हैं, तो this is part of their professionalism. They have to really take that. So I feel that he needs to maybe rest maybe a game or two and see how it goes. And get that confidence back maybe in the next. Can you rest a player just for that reason, especially during the World Cup? I mean, he hasn't scored any runs. I mean, even the pass. Drop maybe. वही मैं drop ही कह रहा हूँ कि just from the England series भी ले लें, New Zealand में भी ले लें, तो he has been struggling. Next game, if you are playing in Perth, definitely you need the fourth fast bowler. और आपको किसी न किसी को तो, क्योंकि आज भी आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद है 2015 World Cup, we played first 2 games with 3 fast bowlers and then we lost to West Indies. बड़ी हमें बहुत बड़ा मैच हमारा, तो एक ही वकार भाई मेरे, जब हम इकट्ठे हुए तो मैंने वकार भाई को कहा कि और कुछ मुझे नहीं पता, but we have no chance without 4 fast bowlers. Yeah. So that's for sure. In Australia we need 4 fast bowlers. Asif Ali and Khushdil Shah, since we are discussing this, वो बेसिकली अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए टीम का, तो वो 2 ऐसे हैं कि जो सेम नंबर के बैट्समैन हैं, जहाँ पे 3 ओवर्स चाहिए, तो वो 2 जो हैं उन दोनों में से एक का खेलना बहुत ज़रूरी है मेरे ओपिनियन में। मुझे लगता है कि आपको हैदर की जगह जो है ना, एक वो उसको लाना चाहिए, मोहम्मद वसीम जूनियर को, क्योंकि वो आपको थोड़े रन्स भी बना के दे सकता है। तो ये आसिफ या खुशदिल, इन दोनों में से एक बंदे को खेलना ही चाहिए। देखो उन पिचेस पे अब मुझे पता है, मतलब
हर टीम ने होमवर्क तो किया होगा ना अपना पूरा डाटा के साथ। मुझे पता है कि मैंने आसिफ को आगे बॉल नहीं करना, स्पेशली पर्थ वाली व्यू में तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बैक ऑफ अ लेंथ मारोगे वो आपके यहाँ आ जाएगा। सो ये चीज़ें सीखनी है। मुझे याद है जब हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया टूर से जाते थे, जावेद भाई और इमरान भाई, हमें वो स्लैब उन्होंने रखी हुई थी तब। आई एम टॉकिंग अबाउट you were there on the tour, 90s, early 90s, mid 1991। वो स्लैब पे क्रिकेट का बॉल लेके आगे खड़े होके वो बाउंसर मारते थे हमें, ताकि हम छोड़ने की प्रैक्टिस करें, बिकॉज वहाँ पे बाउंस ऐसा है। वसीम भाई देखिए, जो जिस नंबर का बैट्समैन है, एज यू ऑल से कि इट्स अ फास्ट गेम, इट इज़, तो जो उस नंबर का बैट्समैन है जिसको हम 6 कहते हैं या 7 कहते हैं, वो ही बेस्ट पॉसिबल हैं आपके जो अभी जो 15 लोग हैं वहाँ पे। तो उन दोनों में से एक बंदे का खेलना, देखें इफ्तिखार ने रन्स किए हैं आज, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। तो वो अब आपके पास जो पहले 4 स्लॉट्स थे वो तो पक्के हैं। अब आप वैसे भी शादाब और नवाज को ऊपर यूटिलाइज करते हैं आप, ठीक है। उन दोनों में से अगर एक बंदा ऊपर चला जाएगा तो 6 नंबर पे आपके पास जो है वो खुशदिल या आसिफ में से एक खेल सकता है। फिर उनके बाद शादाब या नवाज जो 5 पे गया होगा, एक और होगा। वेल इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक ही वेंट विद यू व्हेन यू वर कोच और कैप्टन, आई थिंक ही इज गॉट कोच थे ये। 3 मैच खेला था हिज ऑस्ट्रेलिया में, ही स्कोर ऑलमोस्ट 160 रन्स विद एवरेज ऑफ 80 and strike rate of 150. So he likes that consistent, even bounce. Maybe that's what it appears, his batting style. He's not a big front foot player. Well, you know, at the end of the day, credit to the Pakistani batting lineup, because after losing the 2 key wickets right on top, to actually bring the total to 159 and setting up a 160 target, we must give our boys credit where credit is due. But also let's talk about how good the Indian bowlers were, especially Hardik Pandya, because he took 3 wickets, and he's such an impactful player. He doesn't take his foot off the pedal. When he gets going, he's just at it, and he was bowling really fast. I mean 140 pace, Misbah. I think वो एशिया कप में भी कर रहे थे, और लास्ट जब से वो फिट हो के आए हैं, ही इज़ बॉलिंग क्विक, स्पेशली शॉर्ट बॉल बड़ी तेज़ करते हैं। जी हाँ, आई थिंक दैट इज़ मेनली द एडवांटेज जो इंडिया को आज के मैच में मिला है। This was the Shadab wicket that he picked up first. कंसिस्टेंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंडीशन को समझते हुए ला के आप सीम मारने वाली, ये मेनली ये बैक ऑफ लेंथ बॉल किया, और उन्हीं पे मुश्किल हुई है बैट्समैनों को। And this is the Heather wicket that he picked up. And this is the 3rd wicket that he picked up. Back to back these wickets, just amazing. In 2 overs, he picked up 3 wickets. जी, शादाब एंड नवाज, हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हम उनसे एक्सपेक्ट ज़्यादा क्या करते हैं, बॉलिंग या बैटिंग। Both, they're all-rounders. They are all-rounders, acceptable। फिर उस हिसाब का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। या तो आपका एक बैट्समैन कम होगा, या आपके पास एक बॉलर ज़्यादा आएगा। और जिन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं, एक बॉलर आना चाहिए। This is what Waqar was saying. Waqar is saying that we clearly have too many batsmen here, and we're not giving any cushion to the bowling. We're giving too much cushion to the batting, and I think we need to. It's very clear that the conditions. I mean, I'm not saying कि जो आप ऐसे ही खिलाएं, आप नॉर्मली हम खेलते हुए आ रहे हैं और हम अच्छा करते हुए आ रहे हैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ, बट द कंडीशंस डिमांड ये कर रही है कि अगर घास है पिच पे और जहाँ बॉल कैरी कर रहा था, सम ऑफ द डिलीवरीज वर रियली कैरिंग अप देयर, सो देन स्पिनर्स को फिर टीमें टारगेट करती हैं, और स्पिनर्स में फिर ये होता है कि एक दो बड़े ओवर कहीं भी लग सकते हैं, और फिर आपका सारा वो जो हार्ड वर्क किया होता है वो ड्रेन में चला जाता है। सो आई फील कि यहाँ पे पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हाउ टू ब्रिंग द 4th बॉलर। थोड़ा सा वो पॉइंट आया बीच में कि यू कांट गिव टू मेनी स्पिनर्स इन द मिडल ओवर्स अगेंस्ट इंडिया। What we were discussing. Yes, and we'll come back to that in a moment now. A lot of things to discuss about. We'll go through next. When we come back from the break, we'll talk about the Indian batting, the Pakistani bowlers, the mistakes that could have been avoided, and the result that eventually was. And we will also talk about that no ball call that the umpire made on that 6 that Virat Kohli, because a lot of people are talking about it. We're getting plentiful messages on the social media that कि वो सही नहीं थी बॉल, या उसके अंदर कोई यूं था, ये था, वो था. So we'll look into that in detail and try to figure out what really went down there. So keep watching the Pavilion. You're watching A Sports, 10 Sports, and the ARY's app, and the ICC Men's T20 World Cup coverage continues. See you on the other side of the break.
Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. What a great, cracking game of cricket. Pakistan and India at MCG. Congratulations to Indian fans. Hard luck for the Pakistani fans. We're talking about the game now. Let's take a look at how the Indian innings went. Now, India, of course, under pressure. थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में. I've got with me in the studios Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. Wasim, Indian openers came into play and Shoaib rightly pointed out that they looked under a lot of pressure as well. And you could see how they were playing. We'll show that in a minute as well. Yeah, although they are one of the most experienced batter in this format in world cricket, but this is the beauty of Indo-Pak game. This is the first credit over to the bowlers, the way they bowled the first couple of overs. And obviously, we're talking about Indian batting, we'll be talking about bowling as well, Pakistani. Shaheen definitely looked lack of match practice, for sure. But yes, both the batters are under pressure. Yeah, 100,000 people watching, 1.2 billion people watching on television. It's only natural that pressure will mount up eventually to you. Yeah, totally. Waqar, don't you think that Shaheen was over-pitching the ball in search of that lateral movement? Just putting it But to... he does this, doesn't he? But lack of match practice. On these wickets? On this Yeah. Yeah. Normally he does ball that way, as Wasim bhai said. And, pitch में से उतनी उसको वो नहीं मिली. पहली बात, उसको गेंद से प्रॉबेबली उतना अच्छा बॉल निकल भी नहीं रहा था. ये देखें, नॉर्मली ये वाला बॉल उसका विकेटों के अंदर एंड करता है, मिडिल लेग पे. ये थोड़ा सा स्विंग हुआ. तो जैसे वसीम भाई ने कहा ना, लैक ऑफ बॉलिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रेशर मैच, इट इज़ नॉट, दिस शुड हैव गॉन फॉर अ 4. इट वाज अ वेरी पुअर बैटिंग बाय, आई वुड से, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे. क्योंकि just a pure pressure of Shaheen really was there, no doubt about that. But actual, what we know of Shaheen, what he delivers, he wasn't really there. I mean, I was there in New Zealand and I spoke to the medical panel and I spoke to Babar also and all of them. And I asked this question. I said, you're taking him into the World Cup, and why is he not here? You're going into World Cup, you got 2 warm-ups game. He bowled 6 overs only in the game time. Yeah. He did not play before that. He did not play England series. He hasn't played any cricket. So, आप जितने भी मर्जी fit हो जाए net में या जो warm-up matches में, when it comes to a crunch game, when it comes to a pressure games, you do need a match practice behind you. And he looks like that he's not there yet. वैसे भी नए बॉल पे अगर हम शाहीन की स्पीड देखें, कंपैरिजन अगर करें हम जब वो he was fit before he got injured, तो 145 प्लस जब बॉल आती है, अंदर आती है, उसके साथ डील करना, बेशक नोइंगली के बैट्समैन को पता है कि पहला ओवर ऐसा आएगा तो भी टफ हो जाता है. एंड वी हैव सीन हिम टेकिंग विकेट्स बैट्समैनों को. लेकिन आज जो उसकी स्पीड आ रही थी 132, 134, या तो ये एज वसीम भाई सेड के लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है या वो पूरी तरह फिट नहीं है. नहीं, पूरी तरह फिट में भी होगा. बट डजेंट मैटर, आप 21, 22, 23 साल के भी हो, 21, 22, 23 भी हो, if you don't play cricket at that level for 2.5 months, because he was rehabbing and he started little bits and bob about week and a half, 2 weeks ago. And he played 2 practice game. One he bowled 2 overs, and second one he bowled 4 overs. But my point is, Wasim bhai, ke he wasn't running how he used to run before he got injured. एक ये उसकी चीज़ें हल्का सा limp था उसके उसमें, ठीक है. अगर आपका बॉल सही जगह पे नहीं गिर रहा, that can be considered के lack of match practice है. But speed नीचे आ जाना, it's a big concern. So you're holding back basically. Yes, you're holding back either knee injury, of course, बुरी injury है. और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नी इंजरी है, आपको तो पता ही है हमारे साथ, क्योंकि मेरे अंडर तो फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा खेले हैं जो नी इंजरी से वापस आए. सोहेल तनवीर थे, उमर गुल थे. सेकेंड स्पेल ऑलवेज इज़ अ प्रॉब्लम. सेकंड स्पेल में आपको आइडिया होता है, क्योंकि आप जब स्पेल करके जाते हैं, उसके बाद आप जब खड़े होते हैं, फिर वो दोबारा, क्योंकि जब आप पहला ओवर करने आते हैं नए बॉल से, तो आप वार्म होके आते हैं, आप बाहर बॉलिंग करके आते हैं. मे बी दैट स्लाइटली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है, उस तरह आप उसको पुश नहीं करते, या मे बी कुछ स्टिफनेस कुछ इस किस्म की. बट समथिंग हैपन्स, एंड आई थिंक जो तीसरा और चौथा ओवर था उसमें पेस थोड़ी सी और नीचे थी. और शाहीन नॉर्मली bowls 145, 144 even at the death.
वो Yeah. क्विक होता। He should have played in New Zealand. You know, अगर उसको आपको वर्ल्ड कप में लेके जाना था तो he should have been part of the New Zealand squad और उसमें बॉलिंग करके उसको आनी चाहिए थी। I hope this works for him. This helps him. ये जो 4 ओवर हैं अंडर प्रेशर उसने बॉलिंग की, I feel कि it will make him feel better. And आगे भी जो मैचेस आ रहे हैं थोड़ी वीकर टीम के अगेंस्ट आएंगे तो I think he will get back into his form. I hope that injury is still not there. That is the only or big issue for me. जिस तरह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ना बाबर और रिजवान का रन्स बनाना अप फ्रंट, उतना ही इम्पोर्टेंट है शाहीन का पूरा फिट रहना और अप फ्रंट विकेट्स दिलवाना। ये बिग सक्सेस है पाकिस्तान क्रिकेट की। और यहाँ पे सिर्फ नहीं है मलिक, आई थिंक ही इज एन एसेट फॉर अस एंड यू कैन नॉट जस्ट पुट हिम इन डेंजर इन एक मैचों या T20 वर्ल्ड कप पे, बिकॉज नी इंजरी जो है वो बहुत सीरियस एक इशू है। लेकिन और हमें उसकी ज़रूरत है। उसको टिक ऑफ मिला है मेडिकल पैनल से तो तभी खेला है ना, सो दैट मींस यू नो इट्स You should know, मेडिकल खुद भी ग्रुप पता होता है because I never had knee injury so I don't know। आपको भी knee injury कभी नहीं हुई? नहीं, I मेरे never ख्याल had में। knee injury। So knee injury जैसे मिसबा बता रहा है कि एक दफ़ा हल्का सा डाउट आ जाए ना, I mean इंजरी रिकवरी के बाद भी वो हल्का सा डाउट 1 महीने रहता है आपके बैक में, बैक ऑफ योर माइंड के। अभी किसी भी इंजरी में आपको बैक में मुझे हेड बैक सो काफी देर तक आपको एक फियर रहता है कि ये दोबारा ना हो लेकिन जाए। उसकी असेसमेंट जो है वो मेन मैच में जाके नहीं आप करते, उसकी असेसमेंट जो है एक मैच हमेशा आपको तो पहले वार्म अप मैच तो खेले थे ना, एक वो वार्म अप गेम जो थी उसमें उन्होंने बॉलिंग लेकिन 100% होना चाहिए, क्योंकि that is अगर true. आपसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। That is true. Let's take a look at Shaheen Shah Afridi before the injury, last World Cup में जो उन्होंने स्पेल किया, पहला ओवर किया और आज वाला जरा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। And Waqar, Wasim, you can take us through this. This is him bowling, if you remember, in Dubai. You see how he's going through his actions so quickly. He's really hitting the crease really hard and generating a serious pace. Although that pitch and this pitch, major difference. It was a very slow pitch. This one, you can clearly see that he's not really bending his back. He's just sort of releasing the ball and not really giving it his best of what we know of Shaheen. And the pace, I mean, of course, is not there. It's more than anything else, I feel it's the lack of match practice. I hope there is no injury no issues. need to worry. It's just lack of match practice. That's it. He'll get I think there, the next game he'll be much better. get there, he'll This happens to bowler. It's very normal. It's not a Shahin's fraud. He's one of the best in the world. Yeah. And we should look after him like a Kohinoor. Yeah, we absolutely. And look, the Pakistani bowling did deliver. We had India at 4 for 31 runs for the loss of 4 wickets. That's a good start for any bowling attack, Misbah. बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया हैवीली रिलाई करती है, और स्पेशली सूर्य कुमार यादव जिस किस्म की फॉर्म में है, रोहित शर्मा जिस किस्म की फॉर्म में है। आई मीन उनके मेन 4 बैट्समैन आप ऊपर से आउट कर देते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू जस्ट come back in this game, but again, I mean, this is how it is. One of the greats, अगर आप कहें, the way Virat played, I think he showed his class. Yeah. और जैसे ही वो फॉर्म में आया है और वो यही कह रहा था कि yes, I have seen tough times, but I know it is in me. और जब भी मैं स्कोर करना शुरू करूँगा तो then I can score big. Yeah. So one inning that कैन शो द ग्रेटनेस कि बिल्कुल फ्रॉम नो वेयर ऐसा मैच बनाना, जिताना, और इस कंडीशन में 31 पे 4 आउट थे वो जी, चेजिंग 160 अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग। इवन इन द लास्ट 3 ओवर्स आई थिंक ऑन दिस पिच, और जिस किस्म की ग्राउंड थी, जितनी बड़ी बाउंड्रीज थी, वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स, 2 ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड बॉलिंग, और ये चेस डाउन करना और कैलकुलेटेड किस्म की, और स्पेशली वो 2 शॉट्स जो हारिस रऊफ को खेली हैं, इवन शाहीन का आखिरी बॉल पे जो चौका था, आई मीन दैट शोज द एक्सपीरियंस कि अच्छे बैट्समैन की यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिफोर द बॉलर वाज बॉलिंग दैट डिलीवरी, उसको पता था, वो माइंड रीड कर रहा था कि अब यहाँ पे बॉल आने वाला है, लुकिंग एट द फील्ड, रीडिंग उसके दिमाग को पढ़ रहा था। And that's why I think वो कामयाब हुआ है स्कोर करने। So Virat scored 36 runs on the last 11 balls that he faced. 36 runs of the 11 balls he faced. And also बड़ा अच्छा इन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया है अभी at the end of the game, he was very emotional. And you know, he credited, he said,
Hardik Pandya said to me, just keep playing, keep believing. Keep playing, stay on the wicket, keep playing, keep believing. I mean, that's just phenomenal. And that there's another Pandya was a junior. scary stat for the great Virat Kohli. Yeah. His average against Pakistan spinners his last 10 years is just mere 415 runs. Yeah, and look at the greatness of the guy. Just look at these sixes that he hit now. Look at this one. That this, is- I just, That is the best of the lot. I know, A very difficult shot to unbelievable. play. I think the most And important, again, the most important thing in that inning was his calmness. yeah. I mean, you believe in yourself, no matter जो भी situation है, और even last moment तक they were laughing. वो आखिरी 2 ओवर में सारे बाहर देखने वाले ऐसे बैठे होंगे अब क्या होना. बट हार्दिक पांड्या और वो जिस तरह आखिरी ओवर में बड़े Smiling, relaxed, calm. कॉन्फिडेंट थे. और मेरे ख्याल में जो मेन रीज़न भी थी उनकी कामनेस, और पाकिस्तान थोड़ा सा हम एंड पे आके पैनिक हो गए. थोड़ा सा हमारा जो हम वो प्रेशर को उस तरीके से हैंडल ये नहीं 2 कर दफा हो चुके हैं हमसे. एक दफा ये फाइनल में हुआ है जी, मैं एशिया यही कप लेकर आ रहा था, Wasim. I was going to ask you this question. Look, we had Sri Lanka at 70 something for 60 something for 58 for 6. 58 for 5, and then all of a sudden they put us 170 plus total. That Yeah. became impossible to chase on that. We had them at 30 something 1 for 4. 31 for 4, and then 144, the 5th wicket fell. Yeah. It's just, where are we going wrong? There has got to be somewhere. What is it a bad call on the choices of the bowling resources we are deploying? Is it because the resources are not enough, Waqar? What is going on there? Why do you think we kind of lose? We grip them and then, chal thoda ja saah le. Thodi si, what's going on? ये पिछले कुछ मैचों में ऐसा हुआ है. I mean, Pakistan have won a lot of games also in similar situations also. T20 cricket is like that. You will have games where you will lose also. But yeah, I mean, you don't forget the captain is also very young. Sometimes, reading of the game becomes a little difficult at times. But yeah, I mean, I wasn't expecting that, to be very honest. I thought the first shot was outstanding, the one he hit down the pitch. Second one was just, it could have gone in the hand also, just a flick. And this is T20 cricket. जब आपने कश्तियाँ जला दी होती हैं, तो फिर then you hope कि जब मैं जाऊँगा और मैं play my stroke bravely, and it will come good. And it did come good. I think अगर हम कुछ शोज पहले या कुछ दिन पहले जो हम शो में बैठे हुए थे, तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वसीम भाई से और वकार भाई से, कि हम लोग नया बॉल अच्छा करते हैं, पुराना नहीं अच्छा करते. उसका मुझे जो थोड़ा सा लगता है वो ये है कि आप की जो यूटिलाइजेशन है बॉलर्स की, उसमें आपको एक्सपीरियंस बॉलर 1-2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो रॉ टैलेंट है वो आपको अच्छा स्टार्ट में करके दे सकता है, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ेगा ना तो वो ब्रेक होगा सबसे पहले. Bowlers. I mean, maybe Haris Rauf is one of the premier bowlers. He's playing for long Pakistan. Shaheen also. Pretty experienced. Wasim bhai, there are areas where we had experienced bowlers, but हम इस particular format की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम नहीं देखें, जब आपका फील्ड पे आपका कैप्टन जो है इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आपका कैप्टन जब इनएक्सपीरियंस्ड है तो उसमें अगर व्हेन इट कम्स डाउन टू बॉलिंग, तो अगर आपने देखा हो कि हार्दिक पांड्या जो है वो अक्सर रोहित शर्मा से पहले बॉलर्स के पास चला जाता है, उनको प्लान देता है, अगर एग्जीक्यूट ना हो विच दे हैव डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ठीक है, तो वो चले जाता है. इसलिए जब आपका एक्सपीरियंस आदमी अंदर होता है तो वो बॉलर्स के साथ बात कर सकता है. अब मैं नहीं बता सकता इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी, क्योंकि मैं बैट्समैन हूँ, जो आपको पता है या वसीम भाई को पता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ पे कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस आदमी अंदर हो. और वैसे भी ये सिर्फ हमें बड़े गेम्स याद हैं, लेकिन अगर हम इसके स्टैट्स निकालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऊपर से आउट किए हैं, नीचे से हम लोगों ने मार खाई है. सिर्फ हमें बड़े मैचेस याद हैं. अब एक्सपीरियंस, अब T20 में हारिस को और उसको एक्सपीरियंस है ना. अब हमने जब प्रेशर पड़ा पाकिस्तान पे भी, इंडिया पे भी, आखिरी से 16 से लेके 19वें ओवर तक जो स्कोर पड़े हमें, हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स ने बजाय कि वो जो बैक ऑफ लेंथ हम मुश्किल से डिलीवरी उस पिच पे हो रही थी, हमने
उन कितने काफ़ी सारे, हाँ 11 स्लो बॉल्स किए, 11 स्लो बॉल्स किए हैं तो हमने। ये इनएक्सपीरियंस तो आया ना वसीम भाई। अब इमेजिन आप विकेट लेने जा रहे हो, आप स्लो बॉल, जो छिक्के 2 पड़े हैं वो दोनों तो स्लो बॉलों इसीलिए पे पड़े हैं। एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा तो वो असेस करके बताएगा ना आपको कि बॉलर्स जो हैं अच्छा। नहीं ये नहीं चल रहा तो ऐसे कराओ बोले। So Haris Rauf is unquestionably one of the best death bowlers in the world. 3.4 ओवरों में उन्होंने 24 रन दिए थे और फिर आखिरी 2 गेंदों पे उनको जो 2 छक्के पड़े हैं जब 19वां ओवर करा रहे थे, दैट आई थिंक was what really hurt us and hurt him as well. And वो दोनों बॉल जो थे वो चेंज ऑफ पेस थे। जी बिल्कुल, वो मिसबा उस वक्त वॉज लिटरली अपने इसके बाल निकलने वाले हो गए थे कि वाई, बिकॉज ही नोज एज अ बैट्समैन। शोएब भी वहाँ बैठा था कि पता है कि वो मुझे बॉल मुश्किल लग रहा है, वहाँ से अगर मैं हिट भी मारूंगा तो उससे पहले उससे जो चौथा बॉल किया है हार्दिक पांड्या को, तेज लेंथ बॉल किया तो वो यहीं रह गया, बीटो है, ऑलमोस्ट कॉटन बोल्ड होने लगा था। एंड देन आफ्टर दैट आई डोंट नो, बट इट कैन हैपन टू एनीवन, बट ओवरऑल आई थिंक ही बोल्ड वेरी वेल. But we need to just learn from these mistakes. Obviously, in crunch situations, if we just keep repeating these mistakes. Totally. I think we need to learn from our mistakes, and I think we can learn a lot from how Virat Kohli and Hardik Pandya batted today. Sure. I think we can learn on both sides of this. Just watching them up close, you could really learn a lot from them. अब आई गेस हमें मान जाना चाहिए कि क्रिकेट कहीं भी चली जाए, एंकर का बहुत ज़रूरी है हर टीम में रहना। मैं इसीलिए स्पेशली बिल्कुल खास तौर पे पेविलियन में रिगार्डलेस आप किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हैं, क्योंकि 120 बॉलें बहुत बॉलें हैं। और अगर हम विराट की बिगिनिंग में इनिंग्स देखें, ही लॉट्स रन बॉल भी नहीं थी उसके, 8-10 बॉल ऊपर थे उसके रन से, बट सेल्फ बिलीव एंड ही शोड कि क्लास है उसमें। बिल्कुल है। वकार 154 स्ट्राइक रेट, 154.7, जस्ट अमेजिंग, जस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने मैच जितवाया है। सिर्फ उसका स्ट्राइक रेट नहीं हमें देखना चाहिए, He finished the game. That's what matters. Outstanding. So Waqar, let me bring this to you. ये क्या कहते हैं, फॉल ऑफ विकेट्स कोको कोला की तरफ से, अगर आपकी इजाजत हो तो चलवा दूं प्लीज 2 दफा चलवाएं। एक ही दफा, पैसे एक दफा के। फॉलो विकेट्स brought to you by Coca-Cola. Time for Player of the Match brought to you by Zira Plus. Time for Flying Moments brought to you by Emirates Airline. Time for the best bowler brought to you by the McDonald's app. Shoaib Malik says that he wasn't expecting it. Who wasn't expecting what, Shoaib? नहीं तो ग्रेट्स अगर हम निकालें, जैसे जावेद मियाँदाद भाई हैं, उसके बाद सर विव रिचर्ड्स, इंजी भाई, बहुत सारे बैट्समैन इस तरह आउट हुए हैं उनके करियर में। तो आई गेस एक बॉल से हमें ये नहीं जज कर लेना चाहिए कि वो उसे बाउंसर नहीं खेलना आता या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत सारे बैट्समैन जो है इस तरह आउट हुए हैं। हाँ, उसकी मिस्टेक ये थी कि वो ही वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। अच्छा, हाँ, ये उनकी मिस्टेक थी। So the idea is that the bowler should bowl according to your expectations. Is that what you're saying? You're talking about cricket. Thank you. You see, you have to be ready. At this level, you expect the unexpected. Yes, there you go. That's what I meant. What I've seen, I shared my experience, how I thought. But this is not लेकिन अगर हम उसे एक इस पे जज करेंगे कि यार उसे बाउंसर नहीं खेलना था, वो हल्का है, उसको ये है, हमने तो ये बिल्कुल नहीं बोला कि उनको बाउंसर नहीं खेलना था। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो उनकी पीछे जो फॉर्म लगी हुई है अभी, उसके अंदर उनको प्रॉब्लम नजर आ रही है वाज़े तौर पे। वकार said that he was in New Zealand, he was watching him up close. That sometimes Asif did this statement he gave before Asia Cup. So that statement he has put pressure on himself. Sometimes he कहते हैं ना, अपना काम करो, धीमे धीमे चुप चुप करके काम करो, परफॉर्मेंस करो और घर जाओ. Don't come up with massive quotes and massive things. That's you putting pressure on yourself. Yeah. कभी हमने विराट कोहली को सुना ये कहते हुए, या बाबर आजम को सुना, या आपको कभी सुना. So ये चीज़ें इन बच्चों ने सीखनी है कि बढ़ के नहीं मारनी. Go perform and we'll all support you. Still, I mean, he's a good enough player, no doubt. Yeah. And with that, it's time for Jubilee Safe Hands, brought to you by Jubilee Insurance. Misbah. Game-changing moments by Pepsi. Cola. Refreshing moments, super moments of the day, brought to you by Jazz. Refreshing moments brought to you by Tapal Danedar. Dane dane pe likha hai peene wale ka naam. Fielding effort of the day brought to you by Pampers. All right, now we're going to talk about a bit of a sensitive subject. चूँकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दोस्तों के जो हैं आप देखने वालों के पैगामात आ रहे हैं कि जो एक नो बॉल हुआ फुल टॉस के ऊपर, जिस पे बाबर आजम ने भी जो है वो थोड़ा सा एम्पायर से एहतजाज सा किया,
तो वो हम मेरा ख्याल उसके ऊपर बात करना पसंद करेंगे. I think we need to all get together on it and talk about that. But before that, we're going to take a break. We'll see you on the other side of the break. Keep watching the Pavilion on Sports and Sports and the WhatsApp app. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं The Pavilion on Sports and Sports and the ARYZAP app. The ICC Men's T20 World Cup coverage going on non-stop. Congratulations to Indian fans and Team India for a spectacular win. But to cricketing fans around the world, hey, it doesn't get any more exhilarating than what we all witnessed at the MCG. हम लोग अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है. Everybody is talking about a no ball or a potential no ball or a call that was made by umpire Erasmus. ये बॉल था, जब बॉल हुई तो उस वक्त छक्का मारा था कोहली ने इसके ऊपर फुल टॉस पे और फौरन मुड़ के उन्होंने नो बॉल को किया था. ये हम आपके सामने वीडियो चलाते हैं. मेरे साथ स्टूडियो में हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं. I've got Shoaib Malik, Misbah, Waqar and Wasim. Guys, you can all see this. Now, everybody can see this. Yeah, this interestingly, look, he's demanding for a no ball. There was a no ball at this point, no ball. ये कोई भी बैट्समैन होता वो जरूर कहता है अंपायर को. That's not his fault. Right. No, there's nothing. There's no fault on that. But लोग जिस बात का शिकायत कर रहे हैं कि it was a very close call and Erasmus gave that one very late. Such a big game. You have a technology. Look at that. Yeah. Go use technology. There Why? you go. Why That risking was it unnecessarily? That Why was, flare up things unnecessarily? There you go. And these two are the most experienced umpires. Babar Azam there actually. Now it's too late. Shadab and Babar Azam going. Yeah. He was sent to the leg umpire to Erasmus, and then Erasmus said, "देख बाबर मेरी बात सुन. अब हो गया जो होना था. चल छोड़ ना आगे चलते हैं." Erasmus कह रहे हैं मैंने नहीं उस अंपायर ने कहा. एक दूसरे से पाई जा रहे हैं. So here, Wasim, you bring a brilliant point to the table, and I think we should leave this open for discussion for a moment for everybody. Waqar, I would love your input on this. Misbah, on your. This is a touch and go. देखो यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो डिप कर रहा है बॉल. जी. So maybe उन्होंने वो लिया है, यहाँ से उन्होंने पिक किया है. अब it's kind of touch and go. Naked eye से लगता है नहीं है, but slow motion में देखो लगता है कि था. So the thing, like I said, कि if there is a technology, use it. That's what everybody's saying. Yeah, just go up there. किया? इसको क्यों नहीं थर्ड एम्पायर के पास लेके गए वकार? नॉर्मली ये जो आखिरी रिप्ले आपने देखा है, नॉर्मली क्या होता है कि जब लेग अंपायर का काम क्या होता है कि जो ही बॉल वेस्ट हाइट से ऊपर जाती है, बिकॉज ही इज लुकिंग एट द बैट्समैन, सो ही इज लुकिंग एट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल ऑल्सो. सो इफ ही सीज द बॉल गोइंग ओवर द टॉप ऑफ हिज हेड ऑल्सो, तो वो आपको वाइड बॉल भी वही देता है और वो उस जो फ्रंट पे जो अंपायर होता है उसको बताता है. और इसमें भी यही होता है कि जब आप वेस्ट हाइट से गेंद ऊपर होता है तो ये फौरी तौर पे जो ही उसको नज़र आता है, इस फर्स्ट रिएक्शन इज दिस हैंड कम्स आउट. यस. ओके, दिस हैंड कम्स आउट, क्योंकि इतने शोर में अब आवाज़ तो नहीं आ सकती कि नो बॉल. सो व्हाट ही डज, ही टेक्स हिज हैंड आउट. फर्स्ट थिंग, दैट्स देयर नेचुरल रिएक्शन. एंड दे आर very experienced umpires, no, very good umpires. Yeah. Normal ये होता है. But if you look at in the last replay, he just turned around and he looked at the ball और छक्का हो गया जो भी हुआ, and then it was called because then Virat Kohli asking for it, and then he just watched that very closely. See, the ball is dipping. Arms should have come out right now. Nothing moved. Nothing. So in that fact, means he will turn around. In fact, look. He didn't look. Okay, ये देखें बॉल डिप करे, नीचे ना आए और थोड़ा सा पीछे चलाएं, इसको पीछे चलाएं, यहाँ रोके. ये एक there you go. Yeah, Just the ball stop there. is coming. I mean, it's dipping down I am and not below saying, waist height. I am not saying, and I don't want to. A second. Yeah. I'm not saying, and I don't want to say it. It's a no ball or not a no ball. I don't want to get into this controversy. Yeah. Because normally, yes, I can say that the umpires should have, raise his arm immediately. बाजू निकलना चाहिए था फौरी तौर पे ऊपर, because he saw something and he just realized that it's a no ball. If he realized it, then it should have been called there and then. अगर वो नहीं हुआ है उसके बाद, and then okay, I still feel कि ये विराट कोहली का ये right है to ask for a no ball, and he did. And then the umpires, the leg umpire, should have consulted with the front on umpire, and they should have gone upstairs.
and then allow the third umpire, and that is the reason why he's sitting there. उसको फिर डिसीजन करने देते, वो इसको नो देता, ना नो देता, छक्का देता, जो भी देता, I think it should have been left to him. Wasim, I'm going to ask, you commentate around the world, you've commentated in all these Aussie grounds, in World Cups, so forth and so on. There was another interesting thing, and people are pointing that out, that the entire incident was then downplayed by the commentators. They didn't want to talk about it. They wanted to move on to the match and saying, oh, the six is there, and this is a no ball, and we're going for a free hit. Because we weren't there. Yeah. Me and Waqar would have spoken our mind there and then. And I suppose any Pakistan, I think Bazid is there, probably he wasn't on air then. But yeah, I'm with Waqar, and there's another big issue people are discussing when Nawaz ने उसको बोल्ड किया और फिर वो 3 भागे. एक रैंडम सी चीज़ आ रही है किसी ने कि मैं 5 साल पहले का शायद वो लॉ लगा दी, पीपल थिंकिंग के बॉल स्टम्प्स को लग जाए डेड बॉल हो जाता है. लेट मी रीड यू आप पढ़ के सुनाता हूँ. कानून ये ग्रेट डॉक ने ट्वीट किया था, डॉक्टर नुमान ने. इफ अ बैट्समैन इज कॉट ऑन फ्री हिट ही कैन रन and the score will be added to his total. And if he's bowled with an edge, then he can take runs, which will be added to his total as well. But if he gets out bowled without an edge, he can run, but the runs will go into extra. So hence, umpire ने वो 22 दिए. So ये है नया लॉ. ये नया लॉ है. अच्छा, इस जगह पर ऑफ कोर्स एक तो ये क्लियर हो गया कि कानून क्या है. Shoaib, would you like to add something to that no ball call and what Waqar and Wasim have already said? What Wasim bhai and Waqar bhai said, I am completely agreeing. क्योंकि जब आप एक ऑप्शन है, पहले जो रूल्स थे उसमें ये था कि जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं वो ही उस वक्त जो है कॉल कर सकते हैं. बट जो जैसे वकार भाई ने कहा कि उनका हाथ नहीं निकला, जब वो कनेक्शन हुआ बॉल और बैट का, तब एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा सिग्नल देना चाहिए था कि ये है. एग्जैक्टली. तो जब आपके पास ऑप्शन है तो आपको ज़रूर थर्ड अंपायर से, और स्पेशली इतना बड़ा मैच हो, यही बात है. असल इतना बड़ा मैच हो तो आपको क्रंच मोमेंट में जो डिसाइड कर रहा है मोर और लेस के क्या होने जा रहा है, उसमें आई गेस बिल्कुल फेयर जो है. हम ये नहीं कह रहे कि गलत हुआ या हमसे गलती हुई, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन थर्ड अंपायर से उनको ज़रूर कंसर्न ये शेयर करना चाहिए था, कंसल्ट करना चाहिए था. और उसके बाद जो थर्ड अंपायर देखता स्क्रीन पे, जो कि हम लोगों ने देखा है एज अ स्पेक्टेटर, तो फिर उसके बाद डिसीजन लेते तो उससे अच्छा ऑथेंटिकेट हो जाती ना. फिर ये कोई रूम ऑफ कंट्रोवर्सी, फैंस के दिमाग में कोई डाउट ना रहता, कोई ऐसी चीज़ ना रहती. जो अभी एक रह गया डाउट, ठीक है, नोबडी लाइक्स टू लूज, ठीक है, उसके साथ ऑलरेडी पीपल आर अ लिटिल अपसेट अबाउट दैट. सो इट वुड हैव बीन मच कामर, मच क्लीनर, बिकॉज दिस वाज अ स्पेक्टेकुलर एफर्ट बाय विराट कोहली, irrespective of whatever the decision was on this ball. And I think we should have just, we leave it at that. I think that Misbah, would you like to add anything to that quickly? Misbah said he likes your basket. Can I take it? He can have it back. You can have it back. Look, I said you can have it back. बना लेना ना, इसके आप 3-4 बना लेना. And at the end of the day, so eventually it all comes down to me. It's only a game, man. It is only a game. It is. We should be happy. We should be happy. And with that, it's time for The Way Forward, brought to you by Bank Al-Falah. All right, time for The Way Forward. So, what should be the way forward for... Who should we go to? Who should we go to? Anyone, just... anyone? Yeah, okay. yeah. So, Misbah, you've been very quiet. I go to you on this one. The way forward for the umpires in the remaining of this World Cup when a situation like this is confronted with. सिंपल है. आई थिंक कि अगर आप टेक्नोलॉजी आपने रखी इसलिए कि गलतियां कम से कम हो, टीम सफ़र ना करें, तो थोड़ा टाइम लें और उसको यूज़ करें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स बीन हैपनिंग. आप वर्ल्ड कप देख लें, वहाँ पे भी यही हुआ है 2019 के वर्ल्ड कप के. तो मुझे लगता है कि प्रेशर हैंडलिंग जहाँ प्लेयर्स से गलतियाँ हो रही हैं वहाँ अंपायरिंग में भी हो रही है, तो उसको सीरियसली देखना चाहिए. बिकॉज वन टीम सफ़र्स एंड दैट माइट अफेक्ट देम इन द होल वर्ल्ड कप. इम्पॉर्टेंट गेम थी, और एक किसी छोटे से डिसीजन की वजह से अगर कोई एक टीम सफ़र करती है तो इट शुड नॉट हैपन. There is a reason for the third umpire to be sitting up there. Right. Simple as that. And that technology is there, third umpire is there, take the call there, and that's the way forward with Bank Al-Falah. And we had a lot of fans that had traveled from all around the world to be there at the stadium. And we had a very special person also there. And that special person was representing not just
the entire country, but us, all of us here in the Pavilion, specifically one friend of ours. We've got a package. We are going to play that for you, but right after this break, keep watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports, and the ARY app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द ARY app, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And with that, folks, we were talking about the fans. Now, yes, the Indian fans must be ecstatic with that victory, but the Pakistani fans, the contingent from Pakistan was also there, and we were represented there hardcore in the ground. Let's take a look at this package. Well, there we had Bhavi there at the ground and leading the Pakistani contingent into the ground. Yeah, she did. Yeah. And she was very panicky. She was meant to carry a trophy on the ground as well. Yeah. तो मुझे कह रही थी कि मैं गिर गई तो मैं said don't even think कि तुम गिर जाओगी because तुम probably will गिर जाओगी. But yeah, she enjoyed herself. She called me a little while ago. She said it was the best time she had. And obviously he was a bit sad for the game, but again I told her it's only a game, doesn't matter. Beginning of the World Cup, the Pakistan team will come back inshallah. Yeah, totally. Well, you know, it's such a great thing to see Pakistanis in the ground and the Pakistani fans and both the fans. And look, one thing that I want to bring here, because we spoke about a particular match in Sharjah or in the World Cup in England. Look, India and Pakistani clash is always a very high-pressure clash. Sure. It's, high on energy, high on emotions, but not a single incident of misbehavior by either side fans. That's the way it should be. That's the way it should be. It's the game, and it all depends on the players, because players have respect for each other, and that's what crowd feeds from. If players are having a go at each other unnecessarily, then crowd picks up those vibes. So there's a learning lesson for a lot of other teams in the world. Yes, there are. So अब से कुछ देर बाद दोस्तों Ask the Pavilion, #Ask the Pavilion. हमें पता है आपके बहुत सारे सवालात हैं. एक ख़ास तौर पे जो सवाल आप लोगों का सबका आ रहा था वो नो बॉल के हवाले से आ रहा था, और ये जो नो बॉल के बाद जो फ्री हिट के ऊपर विकेटों को बॉल लगने का था वो वसीम ने क्लियर कर दिया आपको. And you've heard all our panelists, they all have views on that, how they feel about it, what they feel about it. So interesting how things are. ये hashtag आपको नज़र आ रहा है, Ask the Pavilion. और हम आपके सवालात जो हैं वो अब सिलसिला शुरू करते हैं. But before we do that, quickly, Shoaib, your final take from this game today. I think nothing to worry for Pakistan team, और सिर्फ एक दो चेंजेस जो हैं वो लगता है मुझे होनी चाहिए टीम में, क्योंकि उसके लिए आपका कॉम्बिनेशन जो है ना वो बेहतर हो सकता है. और एक बॉलर वकार भाई उस पर काफ़ी इन्फसाइज कर चुके हैं, और जो कंडीशंस हैं उस हिसाब से, अदरवाइज इट वाज अ क्लोज गेम, और हमें वी शुड बैक आवर टीम, एंड आई एम श्योर they'll come back and they'll start winning as well. Okay, Shahid Hashmi Saab was at the ground as well. He works with us, ARY Sports, ARY News, and is one of the seasoned cricketing sports journalists of the country. And he caught up with Fakhr after the game. Let's listen in. Fakhr, bad luck, hard luck, बड़ा अच्छा मैच हुआ, आखिरी ओवर तक गया. पूरा मैच कैसे डिफाइन करेंगे? जी बिल्कुल, हमेशा इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा टफ ही होता है, इसी तरह होता है. और मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने और शान ने मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद बॉलर ने अच्छा फाइट किया है, मगर मेरे ख्याल में विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या को क्रेडिट देना चाहिए. जिस तरह उन लोगों ने बैटिंग की है तो मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट देना चाहिए. जल्दी 2 विकेट आउट हो गई थी, तो क्या प्लान आपने क्या बनाया था शाम के साथ? ये प्लान सिंपल प्लान था कि अब थोड़ा नॉर्मल करेंगे, क्योंकि 2 से 3 विकेटें गिरी थी, तो वही था कि थोड़ा नॉर्मल करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में थोड़ा बाउंस होता है, तो बाउंस के साथ अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. वही हुआ, अच्छा पार्टनरशिप लगा और 5 स्कोर किया. एक तरफ लॉन्ग जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है थोड़ी शॉर्ट है, तो उसको टारगेट किया, 3 छक्के लगाए बड़े अच्छे अक्षर पटेल को. नहीं, ऐसे नहीं है. असल में मेरा स्ट्रेंथ यही है कि मैं सामने हिट मारता हूँ स्पिनर को, और वही हुआ. जहाँ पे आ गए तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पार कर दूंगा. वही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह
स्कोर अच्छा हुआ। 4 जल्दी आउट कर लिए थे हमने इंडिया के, तो हार्दिक पांड्या और कोहली को वो होगी या हम थोड़े से कंप्लेसेंसी आ गई? नहीं, अगर हकीकत में कहे तो हार्दिक पांड्या और कोहली ने अच्छी बैटिंग की है, उन लोगों ने मोमेंटम पकड़ा है। और वो आपकी बात भी सही है, क्योंकि आप में T20 में एक आधा आपसे मिस्टेक होनी पड़ती है, वही एक आधा मिस्टेक हुआ उसे मतलब मैच कहाँ से कहाँ ले गए। आप अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं और आप क्या ये प्लॉय था या ये प्लान था कि लेफ्ट हैंडर नहीं है तो आपको बॉलिंग नहीं दी? नहीं, बिल्कुल हमारा प्लान यही था। मैं बॉलिंग कर रहा था जिस टाइम लेफ्ट हैंडर खड़ा था, मगर वो आउट हुआ तो इसलिए फिर नवाज दी बॉलर ऑलराउंडर खेल रहे तो उनको ज़्यादा मतलब चांस दिया। अच्छा, कोहली की इनिंग्स में? जी बिल्कुल, कोहली ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स किया है। मेरे ख्याल में मैं जितना भी मैंने कैरियर में उसका इनिंग्स देखा है, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है। अच्छा, नवाज को आखिरी ओवर दिया, ये प्लान में था यही कि किसी फास्ट बॉलर के लिए रखना चाहिए था वो ओवर? नहीं, ऐसा नहीं था। जिस टाइम उन लोगों ने मोमेंटम पकड़ा था विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, तो मेरे ख्याल में उस टाइम स्पिनर का नहीं बनता था। वो होता कि हमारा जो ज़्यादा लास्ट ओवर में ज़्यादा रन रह जाए तो स्पिनर के लिए भी ईजी होगा, मगर वही बात कि जिस तरह विराट कोहली ने खेला है आउटस्टैंडिंग। अब अगले 2 मैच पर्थ में हैं, तो अभी तो ये पहला ही मैच था, अभी तो बहुत टूर्नामेंट बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको। बहुत शुक्रिया, वेल प्लेड। Also, Babar Azam, after the game, had a word with, I think, Ravi Shastri. Let's listen in. Right, there you have it, taking a lot of positives out of the game. Babar Azam and the rest of the team stay strong. You've got the rest of the World Cup ahead of you. And with that, we've got a break ahead of us right here on the Pavilion. Keep watching AS Sports and Sports and the AOY Zap app. We'll be right back with Ask the Pavilion momentarily. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं The Pavilion on AS Sports and Sports and the ARY Zap app. And with me in the studios, I've got the legends, the monumental figures of Pakistani cricket. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. और अब दोस्तों चलते हैं आज जो पहला मैच हुआ था श्रीलंका बामुकाबला आयरलैंड. इस मैच के ऊपर बात करते हैं. Here's the match summary on your screen coming up. It was Ireland that won the toss and decided to bat. Now remember, qualifiers के अंदर they chased twice and they won, but here they decided that they're going to bat first against Sri Lanka, putting up 128 for 8. Sterling and Tector there making the big contribution. Other than that, really a deflated performance. And then Sri Lanka comfortably winning that in about 15 overs. Delaney only bowler picking up a wicket. So Sri Lanka won this one by 9 wickets and they go up top on that. ये ज़रा points table पे नज़र डाल लेते हैं इस group की. This is the points table for that group and that comes up on you. So you've got New Zealand right on top with that spectacular average of plus 4.45, and then you've got Sri Lanka right there with 2.47. 2 points each. England also have 2 points, but their net run rate is far lower. So they're on the 3rd position. Afghanistan, Ireland, Australia, all just getting a defeat, so no points for them. That's how that group is shaping up. Right, so now let's talk about this game and let's start off with the fall of wickets brought to you by Coca-Cola. All right, and with that, it's time for Player of the Match brought to you by Zero Plus. All right, and with that, it's time for Flying Moments brought to you by Emirates Airline. Best Bowler brought to you by the McDonald's app. Time for Jubilee Safe Hands brought to you by Jubilee Insurance. Game-changing moments brought to you by Pepsi-Cola. Super moments of the day brought to you by Jazz. Refreshing moment of the day brought to you by Tapal Danedar. Fielding effort of the day brought to you by Pampered. Time for the way forward brought to you by Bank Al-Falah. And Shoaib Malik, let me bring this one to you. What do you think should be the way forward for the Ireland cricket team after today's defeat? I guess top 3 batters उनका बहुत ज़्यादा जो है कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी उनको. और आज जो हम लोगों ने देखा, जो उनके जॉश लिटल और मार्क अडायर, इनको आज मार पड़ी है. एक को जॉश लिटल को 4 ओवर्स में 45 हुए और मार्क अडायर को 2 ओवर में 16 हुए. तो इनको जो ये परफॉर्मेंस देते आ रहे थे और अब क्वालिफाई कर लिया हुआ है उन्होंने, तो अब उनको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है. तो उनको थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि बैठ के ये बात करनी चाहिए और
प्लान करना चाहिए जिन भी वेन्यूज़ पे वो खेलने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है, और अगर क्योंकि बहुत टाइम से वो सेम टीम के साथ खेलते जा रहे हैं, अगर हम लास्ट उनके 3-4 मैचेस देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है. All right, and that was the way forward, brought to you by Bank Al Falah. All right, Janab, it's time for Ask the Pavilion, and we're going to start off our questions. Let me bring this first one up. This is from Wasim Malik. Wasim Malik, जो हैं वो पूछ रहे हैं, और this is a question for all the panelists. He says it was clear that the Indian batsmen were very comfortable in picking up the 2s and the 3s. And looked like the Pakistani fielding was a little slow when it comes to ground fielding. What do you think, Misbah? Be truthful, Misbah. Yeah, you have to be truthful. Yeah. You can say that, but ground भी बड़ा है. I think काफ़ी 2 स्कोर और 3 स्कोर तो हमारे भी हुए हैं. तो ओवरऑल मेलबर्न जब भी आप खेलते हैं, पॉकेट्स बड़ी हैं तो ये 2 रन्स होते हैं. Yes, you can always save. हमने पहले भी बात की है इस पे. You need to be a bit quicker. और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी एंटिसिपेशन अच्छी होनी चाहिए to save runs on these sort of grounds. Otherwise, अगर आप 1 सेकंड भी आप लेट हो जाते हैं निकलते हुए बॉल को उसको एंटिसिपेट करने में, तो इन ग्राउंडों में एक तो आप वैसे ही रन हो जाता है, और फिर ग्राउंड कवर करते हुए थ्रो आप दूसरा रन नहीं रोक सकते. अच्छा, शादाब की कुछ थ्रोज लग रही थी कि he wasn't really putting his full arm into it. Is there any injury that he's carrying or anything like that in the past? या कोई issue है? We are sitting right here with you. Yeah, How do I we don't know? think so. No, we were पास seeing में the कोई throws. ऐसा इशू नहीं था. Recently, I don't know. Maybe Shoaib can tell, but Shoaib? overall सिर्फ पाकिस्तानी फिजियो ये बता सकता है. उनके जब मैं टीम में था तो उनके शोल्डर का थोड़ा सा वो इशू है, और वो रिहैब कर रहे हैं उस चीज़. But shoulder takes a lot of time. I've been through that as an injury. I had a shoulder operation, and उसके बाद it took me about 6 months to मेरी थ्रो 8 महीने में वापस आई थी, और उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद वापस आई तो वो एम उसका 100% नहीं था. Then I realized after about a week or 2 कि यार मैं मार इधर रहा हूँ तो 2 फुट इधर क्यों जा रही है. So वो फिर उसके बाद जब मैंने एम करना शुरू किया, मैं 2 फुट इधर का एम करता था तो फिर वो उधर जाती थी. शोल्डर को टाइम लगेगा. Another thing, if your shoulder is in that sort of situation या जो भी है, तो फिर सबसे लंबी बाउंड्री पे फील्ड करना जहाँ पे आपको पता है कि they are running for 2. He's our all the best time. fielder. I understand. Captain doesn't have लेकिन many throw options. We के have Shan बगैर- Masood and him. and- Haider Ali is not. And one more The thing, best I mean, fielder. I don't know what was the reason. Shaheen has the best arm. और वो अगर देखें तो वो सर्कल में फील्ड कर रहा था, वो शॉर्ट थर्ड मैन पे कर रहा था फील्ड. सो ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न है कि वाई. He is one थोड़ा of the सा best आप ये fielders. बताएं Shaheen. कि शाहीन के नी का मसला है, इसलिए वो यूजुअली वो बाउंड्री लाइन पे फील्ड करता है. वो Yeah. सिर्फ उसका आर्म अच्छा नहीं है, वो वैसे भी He ग्राउंड is बड़ी a जल्दी fielder. कवर करता है. शादाब को इसलिए मिड विकेट पे रखा गया हुआ था क्योंकि वो भी ग्राउंड बहुत तेज़ी से कवर करता है, तो उसका थ्रो कहीं ना कहीं हो जाता है. लेकिन व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द टीम तो उनका रीहैब चल रहा है शोल्डर का, और इसीलिए उनका जो थ्रो that's है why. वो वैसे नहीं Okay. आता. लेकिन ये है कि कंसर्न ज़रूर है क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड आप डीप पॉकेट्स होंगे, बहुत सारे वेन्यूज़ पे ऐसी चीज़ें हैं, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डीप पॉकेट्स में कौन से ऐसे फील्डर्स को जो है खड़ा किया जाए, ताकि देखें 10-15 रन जो है एंड ऑफ द मैच वही मैटर होगा, और वो फील्डिंग से रुकेंगे क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज हैं. चलिए, फॉर आर्गुमेंट सेक तुम कह रहे हैं कि अच्छे फील्डर जाएंगे. अब ये जो प्लेइंग 11 में आपके पास एक शान मसूद है जो हॉट स्पॉट पे जाएगा, दूसरा हैदर अली है जो हॉट स्पॉट पे जाएगा. हैदर अली, सॉरी कह रहा हूँ, गलती हो गई. शादाब खान है जो हॉट पे जाएगा. अब तीसरा फील्डर मुझे बता दो कौन जा सकता है हॉट स्पॉट पे. स्किपर हारिस रऊफ इज गुड. यस, हारिस रऊफ इज गुड. फाखर बहुत अच्छी उस कैचिंग है, बहुत अच्छे कैचेस पकड़ता है वो. और आपके पास देखें ये मिलजुल के करना पड़ेगा आपको, और मुझे ये लगता है कि आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्योंकि डीप पॉकेट्स हैं. आज हमने देखा कि शादाब मिड विकेट टू मिड विकेट जा रहा था, और बीच में बहुत सारे रन्स ऐसे बन रहे थे कि मोस्टली बॉल जो था वो मिड विकेट पे जा रहा था. तो उसमें यह है कि एक तरफ से शादाब कर सकता है, एक तरफ से हारिस रऊफ कर सकता है, तो इस तरह मिक्स करना पड़ेगा ताकि जो आपके पेस बॉलर्स हैं उनका एनर्जी लेवल भी उस तरह डाउन ना हो.
राइट ऑन। अगला क्वेश्चन जो है ये एम अरसलान मान की तरफ से आया है और वसीम ये आपसे सवाल है, आस्क द पवेलियन वसीम भाई, व्हाई the spinners are not told not to follow the batsman? If the batsman is going towards leg side, why do they not bowl outside wide of the stump? Arsalan. यार ये अब ये बॉलर्स हमारे शादाब ले लो, आप नवाज ले लो, ये आप पहली दफ़ा नहीं खेल रहे पाकिस्तान से, उनका पहला वर्ल्ड कप नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, दे शुड नो देमसेल्व्स। बट सम टाइम अंडर प्रेशर गेम में आपसे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और उससे मैच का 5 पलट जाता है। सो दीज आर वी हैव इन दिस फॉर्मेट एंड आई थिंक दे विल इवेंचुअली डिलीवर। ओके, अगला सवाल जो है ये इबाद रिजवी से आया है और वो कहते हैं कि योर एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर्ड, कैन पाकिस्तान कंप्लेन टू मैच रेफरी रिगार्डिंग द नो बॉल इशू एंड शुड पाकिस्तान डू इट? वकार। I guess they can, excuse me, I guess they can write in their report. I don't think they can do anything about it. Match is over, it's all done and dusted. So I feel if they feel that they've been hard done, they can always write in the report, the captain's report, the manager's report. They always go to ICC. रिपोर्ट से फ़र्क पड़ता है, बिकॉज हमारे दौर में तो हमने बड़ा लिखा बड़े अंपायरों के, सर्टन अंपायर के, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, नेवर हैपेंड, वही अंपायर हमें दोबारा मिले, शायद अब चेंज हो गया हो। आई थिंक अब वो एलीट अंपायर्स का भी इशू है ना, तो आप जब जो आपकी रिपोर्ट आती है फिर उस पर एनालाइज करते हैं ये लोग, एंड देन देयर इज अ टॉप एलीट्स, देयर इज 8 ऑफ देम आई थिंक, एंड देन देयर इज अ सेकंड ग्रेड वन। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक फरहान सिद्दीकी का ये सवाल है और वो कहते हैं कि आसिफ अली और हैदर अली की कारकर्दगी देखकर ये लगता है कि उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए, मगर बेंच स्ट्रेंथ देखें तो कोई भी मौजूद नहीं है, ये कैसा स्क्वाड मुंतखब हुआ है, क्या ये सही है आपकी नज़र में? सो फरहान सिद्दीकी का सवाल है, उर्दू में उन्होंने ये ट्वीट किया है, एंड आई वुड लीव दैट विद ऑल ऑफ यू, इट्स ओपन फॉर डिबेट फॉर एवरीबडी। इट्स टू लेट टू इवन टॉक अबाउट इट। अगर हम इस पे क्या भी देंगे, स्क्वाड फॉर इंस्टेंस ठीक नहीं है, सो व्हाट विल हैपन? द स्क्वाड इज देयर, लेट्स ट्राई टू सपोर्ट देम, एंड सेकेंडली प्लीज आई बेग यू, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ योर ओन क्रिकेटर्स। वर्ल्ड कप अभी शुरू हुआ है, अभी ये लंबी रेस है, ये छोटी रेस नहीं है। सो जितना तुम्हें गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, थोड़ा जा काबू कर लो। I don't think he was negative about it. He was just saying not him. But generally other people. ये तो मैं देख रहा हूँ आज द पवेलियन में बहुत सारे नेगेटिव सवाल हैं. That was a valid question. That was a valid question. ट्रेंडिंग में अगर आप किसी के खिलाफ जाते हो अपने लड़कों के, तो वो ज्यादती है. वो तो उसमें तो कोई शक नहीं. I think we've already discussed that we should back this team up no matter what. मैं थोड़ा सा इस पे बात करूँगा. डोमेस्टिक में अगर आप वापस जाएं, वाइट बॉल क्रिकेट देखें, T20 क्रिकेट देखें, PSL भी देखें, तो यही बैट्समैन है जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं. टॉप परफॉर्मर यही है. उसमें वाइट बॉल में आप देखें, मुल्तान सुल्तान के लिए जब भी खुशदिल खेला है, उसने ये जो नंबर 6 पे एंकर, नंबर 6 पे जो एक फिनिशर है, उसका रोल उसने बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया. उसके बाद आसिफ ने प्ले किया वहाँ पे. T20 है, तो यही प्लेयर है आपके पास. सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन्हीं की. ऑब्वियसली पिच मुश्किल थी, यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं, बट दिस इज व्हाट यू हैव. राइट. फहद मुस्तफ़ा ने सवाल भेजा है जो कि मैं मेरा ख्याल है नहीं पढ़ सकता है ऑन एयर. फहद, यू शुड नो बेटर. मेरा ख्याल है I'll ask these guys when we go in the green room. But with that, I think we're going to close Ask the Pavilion here today. Once again, congratulations to the Indian fans and to the Indian team. What a wonderful gameplay there by Virat Kohli and Hardik Pandya. Congratulations. We wish you all the best for the rest of the tournament. And to the Pakistan fans, don't lose heart. This is just the first game. We've still got many games in this group to go before the semi-final finalists appear in front of us. कल के मैचेस पे नजर डाल लेते हैं. Tomorrow morning we will be back with you at 7:30 in the morning, and tomorrow we have another game. This is from Group 2. It will be Bangladesh clashing with Netherlands at Hobart at 9 a.m. and then we have the second one, which is South Africa versus Zimbabwe. This is also going to be an interesting game, also from Group 2. So ये दोनों games आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. #AskThePavilion पे सवालात, कमेंट्स जो है वो भेजते रहिए. हमारे सोशल्स में हमें फॉलो करते रहिए. और तमाम वो दोस्त जो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, स्पेशली वो दोस्त जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक में, खासतौर पे इंडिया में देखते हैं, प्लीज़ कीप फॉलोइंग, कीप सेंडिंग अस दोस कमेंट्स, एंड वी विल सी यू राइट बैक हियर टुमारो एट 7:30 a.m. Pakistan Standard Time on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app with the ICC Men's T20 World Cup coverage. Till then, take care of yourselves. Good night.